Hi, I'm Samarth from Wintwealth. Imagine if you can make 1.2 lakhs per year apart from your regular source of income. Why is this extra income required? I have a dream of owning a house. Someone might have a dream of owning a big car. किसी को अपने बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में भेजना है और किसी को वर्ल्ड टूर पे जाना है. एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट आपकी जो रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है दैट इज़ इनफ to help you achieve all of that. That is where the potential solution comes in. It's called passive income. But what is passive income? Passive income is any income which you generate by putting in lesser effort than your regular job or business. ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा lesser effort. No effort होता तो probably सब कोई करोड़पति बन गए होते. Would you believe that Warren Buffett, who is one of the world's best investor ever, makes $4.3 billion per year just through passive income, wherein he has invested his money only in 5 stocks. Today, we'll be talking about all the avenues that you can probably explore easily to generate some additional passive income. First stream about which we'll talk is equity. सबको पैसा स्टॉक मार्केट में डालना है, but is it actually passive income? The answer is no. This is where dividend stocks or dividend mutual funds come in. सबको पता होगा डिविडेंड क्या होते हैं, बट लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू इन वेरी सिंपल वे. मान लीजिए कि आपने किसी कंपनी के कुछ शेयर्स खरीदे. अब ये कंपनी वुड बी अर्निंग सम प्रॉफिट थ्रू इट्स बिजनेस. कंपनी हैज 2 ऑप्शंस. आइदर इट कैन री इन्वेस्ट दैट प्रॉफिट इन द बिजनेस टू जनरेट हायर इनकम, और it can distribute a part of its profit among its shareholders. When such profit is distributed among the shareholders, उसे dividend कहते हैं. जो भी stocks इंडस्ट्री से हायर डिविडेंड पे करते हैं या उनकी डिविडेंड यील्ड इज हायर देन द इंडस्ट्री एवरेज, उनको डिविडेंड स्टॉक्स बोला जाता है. डिविडेंड म्यूचुअल फंड्स उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जो डिविडेंड स्टॉक्स के तौर पे क्वालिफाई करते हैं. टिपिकली डिविडेंड स्टॉक साल में 2 बार या 1 बार डिविडेंड पे करते ही करते हैं. दैट इज द रीजन वी हैव पुट देम इन द लिस्ट ऑफ पैसिव इनकम, जहां पे आपको एटलीस्ट ईयर में 1 बार एक इनकम स्ट्रीम बनेगी ही बनेगी. अगर आपको जानना है कि कौन से स्टॉक्स एक्चुअल में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं एज डिविडेंड स्टॉक्स, we'll be showing the chart on the screen right now. You can select some of these stocks as a part of your portfolio and help create a regular stream of income for yourself. There are multiple other options through which you can participate in the equity market, but अभी हम उन पे focus नहीं कर रहे हैं. And the reason for that is all of them, or probably majority of them, will qualify under active investment. We are only talking about passive investment, and that is why we are only focusing on stocks which are dividend stocks or dividend mutual funds. Now we'll be talking about the second option which you can explore, that is debt. Debt के अंदर you have lot of options. You can invest in bonds. That bond can be issued by governments, it can be issued by state governments, it can be issued by public sector undertakings, or they might be corporate bonds issued by private companies also. Bonds के अलावा you can put your money in fixed deposits. आप किसी भी बैंक में जा सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट ओपन कर सकते हैं, आपको एक रेगुलर इनकम मिलती रहेगी. और यू कैन पुट योर मनी इन पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम, किसान विकास पत्र एट्सेट्रा. बहुत सारी स्कीम्स है गवर्नमेंट के द्वारा जो कि ओपन की गई हैं, एंड यू कैन गेट अ रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम. हैविंग सेड दैट, आज हम ये सारे ऑप्शंस को क्लासीफाई करेंगे एज हाई रिस्क, मीडियम रिस्क या लो रिस्क. पहले वी विल डिस्कस अबाउट लो रिस्क. लो रिस्क इंस्ट्रूमेंट में आते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड फिक्स डिपॉजिट. एज ऑफ टुडे, Government bond of India 10-year benchmark is trading at around 7.50%, which in itself for 10 year is a good rate considering that it is the highest rating which can be available to any bond, that is sovereign rating. Apart from that, you can go to any of the banks and open a fixed deposit and ensure that you get a regular stream of income monthly, quarterly या yearly या maturity पे depending on the option you choose. Second, we'll talk about the medium risk options. Medium risk options में आते हैं corporate bonds. These bonds are issued by different companies. They can be issued by public sector undertakings or private companies can also issue these bonds. और इनका जो risk है, it completely depends on the entity which is issuing it. If a AAA rated entity is issuing it, then the risk factor is very low. But if an entity which is rated lower than AAA is issuing it, then the risk factor increases accordingly. By the way, अगर आपको corporate bonds explore करना है, then you can visit www.wintwealth.com, जहाँ पे आप corporate bonds में investment explore कर सकते हैं, wherein you can easily generate
9 to 11% fixed returns for short to medium term, that is 12 months to 24 months. Another option which you can explore under medium risk category under debt segment is money market funds. Money market funds are typically those mutual funds which invest its corpus in short-term instruments available in the market, like treasury bills or commercial papers. Moving to the third category, that is the high risk category. Fixed return generate करने के लिए you can explore P2P lending. Having said that, it's a high risk category and you should only invest your money when you are comfortable taking an exposure on any P2P platform. Third category, अगर investments की बात हो रही है और real estate की बात ना हो, then it will not be fair. Slowly, everyone is moving to an access-based system rather than owning something. मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो आपको इस एग्जाम्पल से ज़्यादा सिंपल वे में समझ में आएगा. सबका मन होता है दैट उनके अपनी खुद की व्हीकल हो, अपनी खुद की कार हो, बट नॉट एवरीवन वांट्स टू इन्वेस्ट अ लमसम मनी अप फ्रंट. व्हाट डू दे एंड अप डूइंग? दे एंजॉय द कार राइड बाय रेंटिंग ओला या उबर. वैसे इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट रेंटिंग अ कैब वर्सेस ओनिंग अ कार, प्लीज क्लिक ऑन द लिंक अबव एंड वॉच दिस वीडियो. इसी तरह देयर हैज़ बीन अ शिफ्ट in renting out spaces rather than owning them. Smart real estate investments can help you ensure a regular inflow of money through a income stream. मान लीजिए कि आपने डिसाइड किया कि आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना है. What options do you have? You can buy a flat or a house and rent it out for regular income. You can buy a land and lease out to any business for generating income. Or you can invest in funds which themselves invest in real estate. We'll talk about these in detail later in the video. If you want to buy a flat or a house, you can probably choose a flat in a commercial area. For example, Bangalore की बात करते हैं. There are a lot of IT hubs. You can probably buy a flat near to one of the IT hub and rent it out. Because आप IT hub के पास में फ्लैट खरीद रहे हैं, then definitely there will be a lot of demand. Demand होगी तो रेंट भी अच्छे मिलेंगे. You can expect in Bangalore rental yield of around 3.5 to 3.6% yearly. I know this is very less, but अगर आप कंजर्वेटिवली भी अज्यूम करते हैं दैट आपके फ्लैट की या रियल एस्टेट की वैल्यू 4 से 4.5% भी ईयरली बेसिस पे बढ़ेगी, विच इज़ वेरी कंजर्वेटिव, देन ऑल्सो यू आर मेकिंग अ हेल्दी इनकम ऑफ ओवरऑल हेल्दी इनकम ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 7.5 से 8% with a very solid asset being a part of your investment. But real estate investment is not as easy as it sounds. कोई भी प्रॉपर्टी सेलेक्ट करने के पहले देयर आर सर्टेन थिंग्स विच यू नीड टू टेक केयर ऑफ. लोकेशन क्या है प्रॉपर्टी की, वैल्यूएशन क्या है प्रॉपर्टी की, क्या उस एरिया में रेंटल यील्ड अच्छी मिल रही है कि नहीं, एंड मोर देन दैट क्या उस एरिया में रेंटेड प्रॉपर्टीज की डिमांड है कि नहीं. बट इफ यू डोंट हैव सो मच ऑफ टाइम or you don't want to take the risk of investing your money directly in real estate, you can explore REITs, that is Real Estate Investment Trusts. एकदम सिंपल भाषा में, जब आपको एक्सपीरियंस नहीं होता या you don't want to invest your time in selecting stocks, then what you do? You invest in a good mutual fund. Similarly, जब आपके पास टाइम या उतना अमाउंट नहीं है to invest in a real estate, that is a flat or a house or a land, you can invest your money in REITs. What REITs are? They are essentially mutual fund which invest the pooled money into real estate properties. उन real estate property से जो भी income generate होती है, a part of it, in fact majority part of it is distributed among the unit holders as dividends. That is why it's a very simple way of taking exposure on real estate. Another option to take exposure in real estate is InvITs. Similar to REITs, यहाँ पे भी investment real estate में होता है. Only difference is investment happens in infrastructure projects like roads. यहाँ पे भी जो भी इनकम ये इनविट्स बनाते हैं उसका मेजॉरिटी पार्ट अपने यूनिट होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एज डिविडेंड. नाउ दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट द ऑप्शंस वेयर यू कैन पुट योर मनी टू जनरेट सम पैसिव इनकम, इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू नो दैट कितना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना है सो दैट यू हैव अ बैलेंस पोर्टफोलियो एंड अ गुड इनफ्लो ऑफ रेगुलर इनकम. आपका पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन विल डिपेंड a few factors. Some of them are your age, your risk appetite, your financial independence and your goals. अगर आप around 30s के हैं और आप बहुत ज़्यादा एक्टिवली इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो आई एम अज्यूमिंग दैट आपके पास कुछ सरप्लस फंड्स पड़े होंगे. लेट्स अज्यूम दैट आपके पास अराउंड 15 लाख के फंड्स सरप्लस में हैं. अगर आप ये 15 लाख के फंड्स इन पैसिव ऑप्शंस में इन्वेस्ट करते हैं तो बेसिस आवर कैलकुलेशन वी कैन अज्यूम
that you will be able to generate around 8% per annum safely in these options, which translates to 1.2 lakhs per year. If you have additional rental income from any of the investments which you might have done before, then ये नंबर और बढ़ सकता है. अगर आप अपने अर्ली 20s में हैं या मिड 20s में हैं, आर एडवाइस वुड बी दैट यू शुड बी एग्रेसिव विथ योर पैसिव इनकम इन्वेस्टमेंट. बाय दैट वी मीन आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का पोर्शन जो आप पैसिव इनकम के लिए एलोकेट करेंगे शुड बी इन्वेस्टेड इन डिविडेंड स्टॉक्स या डिविडेंड म्यूचुअल फंड्स, दैट इज इक्विटी साइड पे. अगर आप मिड 30s या अर्ली 40s में हैं, देन यू कैन हैव अ गुड बैलेंस ऑफ डिविडेंड म्यूचुअल फंड्स एंड डिविडेंड स्टॉक्स प्लस debt may be probably corporate debt more because it will help you generate returns closer to 9 to 10%, and you should aspire to save enough that you can probably get one real estate which will help you get more income later. But if you are in early 50s or probably closer to retirement या आप retire हो चुके हैं, then you should focus only on options wherein आपका capital is protected to a great extent and it also helps you generate some additional income. Before we end, passive income का मतलब ये नहीं कि आपने पैसा डाल दिया और सो गए. For every single penny that you invest, our advice is उसको मॉनिटर करिए. उतना एक्टिवली नहीं जितना आप अपने रेगुलर जॉब को या रेगुलर बिजनेस को या रेगुलर इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को करते हैं. बट आवर एडवाइस इज any investment that you do, you should keep an eye on it. Passive income will help you generate a huge amount of income flows over the years, and please do consider it as a very active part of your portfolio. वैसे, if the recent market downtrend has you worried, then you can watch this video. इस वीडियो में we have tried to give out some tips जिसमें आप मार्केट डाउनट्रेंड में भी अपने पैसे को बचा के रख सकते हैं स्टॉक मार्केट में and probably end up generating some more money. Until we meet next time, happy minting.